हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इन वीडियो में मैं थोड़ा इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट को टेक्निकली देखने वाला हूं। मींस टेक्निकली थ्रू ट्रेंड, मोमेंटम और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है बेसिकली मार्केट हमें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अ लुक एट दैट वन। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज S&P 500 का चार्ट है और ये मेरा स्पेशल फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप है जिसके जरिए मैं देखता हूँ। और जो रेनबो सेटअप यूजर्स हैं, आप ये सेटअप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नीचे इंडेक्स फ्यूचर अगर आप सिलेक्ट करेंगे और टेबल ऑन रखेंगे तो वैसे दिस दिस विल कम अप एंड यू विल बी एबल टू मॉडिफाई देम एज यू सी फिट। जो भी इंडिसेस आपको चाहिए, इंडियन, इंटरनेशनल, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि ग्लोबली द थिंग्स आर नॉट वेल। इफ आई लुक एट कि मेरा जो फर्स्ट, दिस इज वन राउंड ऑफ इंडेक्स और हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है उन्हीं को ज्यादा देख रहे हैं। तो यूएस में नॉट सो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक दे वर इन स्ट्रेंथ, बट एक्सेप्ट फॉर S&P, Nasdaq strength is falling and Dow is more in a neutral zone. Neutral zone to rising, we largely get buy support opportunities. This is the biggest of the US indices. Wilshire 5000 is falling. यूरोप पे वीकनेस completely evident है और अपना निफ्टी significantly strong। ये पिक्चर हम लोग देख सकते हैं कि बाकी का जो इंटरनेशनल मेन इंडेक्स, स्पेशली एशिया में देखिए यहाँ पे जो यूरो स्टॉक्स, चाइना, हांगकांग, दीज आर वीक। जहां पे स्ट्रेंथ मुझे दिख रहा है रादर सिंगापुर एंड जापान। एंड जापान में आई हैव टेकन अ पोजीशन HEWJ, आई शेयर्स करेंसी है MSCI जापान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सो इसके जरिए मैं बिना करेंसी का एक्सपोजर लेके जापान का इक्विटीज ले सकता हूँ। जापान का करेंसी इज करंटली डिप्रिशिएटिंग, सो गोइंग फॉर अनहेज्ड जापानीज इक्विटीज ठीक नहीं रहेगा। So S&P 500 दिखा रहा है इन द डेली चार्ट, इट इज स्टिल समवॉट स्ट्रॉन्ग। मैं क्या करने वाला हूं, मैं नीचे का टेबल तो ऑफ कर दूंगा। दिस इज एक्चुअली एन ओल्ड मॉडल, तो मैं लेट मी यूज द लेटेस्ट वन। इनवाइट ओनली में जाके SD रेनबो वेव वर्जन 1, उसमें अप्लाई करना है इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स वैसे डिफॉल्ट तो इंडियन इंडिसेस, इंडियन सेक्टर्स को दिया गया है। तो लेट्स मेक इट फाउंटेन ऑफ गोल्ड, मदर सेटअप बना देते हैं और इसके जरिए डिफरेंट जो इंटरनेशनल इक्विटी इंडिसेस है एक बार क्विकली देख लेते हैं हालत क्या है उनका। ओवरऑल S&P is still bullish, strength is quite there, is going up steadily. After a few days of correction, the strength has been portrayed for the past 3 days and today it is now in the mood to break higher. डाउ दिख रहा है, डाउ आफ्टर करेक्शन, वही मैं एक्सपेक्ट दिस करेक्शन के बाद इट इज अ फुल ग्रीन कैंडल, प्रोबेबली इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। सो डाउ में बाई सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आई लुक फॉर। Nasdaq देख रहे हैं हम लोग। Nasdaq, लेट मी एडजस्ट द चार्ट। बुलिश था बट Nasdaq में स्ट्रेंथ थोड़ा फेड हो रहा है, वो हम लोग मीटर से देख चुके हैं। Nasdaq भी ऊपर जा रहा है आफ्टर करेक्शन। इफ इट शॉर्ट टर्म मोमेंटम का अलर्ट डाल दीजिए। शॉर्ट टर्म मोमेंटम टर्न्स बुलिश एंड स्टेज देयर टिल क्लोजिंग, Nasdaq विल बी गुड फॉर री एंट्री। रासेल यूरोपीय US का शॉर्ट और मीडियम टर्म अगर मिड कैप सेक्टर्स को देखे, इट्स अ कॉम्बिनेशन, देन रासेल इज नॉट गुड। देन वील गो टू एशिया। एशिया में देखिए दिस इज Vietnamese index not doing well. What where the strength relatively is South Korea. South Korea is where थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश हो रहा है। सिंगापुर में है। If we look at Singapore, Singapore is also have been projecting strength. स्पेशली इन लोगों के लिए मैं थोड़ा वीकली चार्ट देखना प्रेफर करता हूँ। अनदर वीकली ब्रेक आपका साउथ कोरियन इंडिसेस में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है।
So South Korea and Singapore, it could be the next choice. Abhi ke liye we are seeing strength come back in Japan as well. Japan भी थोड़ा strength दिखा रहा है, Japanese stock, and coming back from a strong level. So Japan looks bullish. Part of Asia, कुछ एशिया जैसे हमारे इंडिया, एशिया, जापान, फिर हम लोग देखिए साउथ कोरिया, देन वी हैव सिंगापुर. These are looking much stronger. Whereas Asia ka big ticket name, China, Hong Kong, these are not so strong. Hong Kong have been battered, but ये थोड़ा comeback का sign दिखा रहा है. But अभी भी buying के लिए, no, buying के लिए it's not ready. So I'm not going for any buying in Hong Kong. Rather Asia में ही मेरा bet रहेगा, अमेरिका में मेरा bet रहेगा, S&P 500, a comeback in Dow. Let's see a Nasdaq kind of. Then if I come to Asia, my focus will be in South Korea, Japan, Singapore, India. And now next is where another round of weakness dikh raha hai. This is one of the index which have been relatively stronger is Netherlands. But जो main index है उसमें weakness है, that is Italy, Spain, France, जहां भी देखिए the strength is not there. This is Spain, IBEX 35. Then we have France. This is CAC 40. CAC 40 का CFD contract. So these are not good, not healthy. Some are come back in Germany, as you can see from the RSIX crossover. But अभी भी Europe उतना strong नहीं. Just a first buying signal in Germany needs to sustain above this flat line. If it does, maybe we'll see a round of comeback in Europe. But Germany is one of the prominent index in Europe, so German comeback would boost the other comebacks in Europe. But overall, this is Eurostock ka blue chip index, Eurostox. It is also showing comeback, but these are not enough, not utna strong nahi. Itme buy trend is just a प्रोबेबल कमबैक जो आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं, ऐसे दिख रहा है जो यूरोप का सिनारियो. सो इंटरनेशनली मुझे दिख रहा है, इंटरनेशनल दिस इज द ऑल ग्लोबल पोर्टफोलियो, इसका बुल का स्ट्रेंथ घट चुका है. इट कैंडल इज बहुत छोटा, किसी भी तरफ टर्न हो सकता है. और ग्लोबल इक्विटी मार्केट स्टिल नॉट बियरिश, अबाउट 64% बाय ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी. इसके अंदर S&P is strong, Dow is a comeback, Nasdaq is neutral, Russell is weak. Europe is weak, Asia partly weak like China and Hong Kong, and where there are some support-based strength, there is South Korea, then we have Singapore, then we have Japan, and the stock market that is firing in Asia is ours, India. Indian stocks are steadily, superbly going up. So that's all, friends. That's a look at the overall global equity market picture. I hope this discussion is helpful to keep you in the right tune of the mind, right mood, game पे. मेरे पीछे वैसे कमोडिटी एनालिसिस दिख रहा होगा आप लोगों को. आई होप आप लोग मेरा रेगुलर कमोडिटी वाला वीडियो भी देख रहे हैं. उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज था, जिंक में था, क्रूड ऑयल में था. अब तो क्रूड ऑयल आज नया ब्रेकआउट भी दे रहा है. So I hope आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख रहे हैं. All the best. Thank you so much for watching. And as always, special thanks to members for joining my channel. All the best to you and happy